Good morning, students. How are you all, children? Children, I hope you all are doing well. Children, today we'll start with the explanation of the remaining part of your first chapter of a supplementary book, How Do Camel Got His Hump. So, children, before starting with the explanation of the second part, let's recall what we had learned till yet. Children, till yet we came to know that as the world has just begun and all the animal had started doing work for men, here is one animal who lives in the center of the desert, who don't want to do any kind of work, and whenever he was asked by anybody to do work, he always replied hump. So this, all the animals, the horse, the ox, the dog, they don't like this kind of behavior of camel. So what they decided to complain uh, about him to the men, and they call the panchayat. They told everything to men that the camel don't want to do any kind of work. Then the man took the decision that okay, it is okay if it is not doing any kind of work, then you all will do double work so that no work will remain. And this make them really very angry, and then they decided to complain to the jinn about the camel, because he was the in charge of all of the desert. So they go to the jinn, and there they told everything about the camel, and then the jinn got to know that yes, this is the long neck and the long legs animal was only the camel. So he asked from the horse. So whenever you people asked him to do any kind of work, what did he reply to you all? The horse told him that he always used to say hump. Now let's start with the second comprehension. The jinn rolled himself up in his dust cloak and took a walk across the desert and found a camel looking at his own reflection in the pool of water. My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. Here, children, when the jinn went to the camel, he found the camel who was looking at his own reflection in the pool of water. वो पूल ऑफ वाटर में अपना रिफ्लेक्शन ही देख रहा था, अपने आप को देखकर खुश हो रहा था ऑन हिज ओन ब्यूटी. उसको बहुत अच्छा लग रहा था अपने आप को देखकर कि हाउ ब्यूटीफुल आई एम, आई हैव लॉन्ग नेक, आई हैव लॉन्ग लेग्स. सो व्हेन द जिन वाज टॉकिंग टू हिम, ही पेड नो अटेंशन टू द वर्ड्स ऑफ जिन. उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि क्या जिन उसको कह रहे हैं, उसका कोई उससे मतलब नहीं है. You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with his chin in his hand. तो वो उससे बोल रहा है कि अरे तुम्हें 3 दिन से तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, तुम्हें 3 काम दिए गए थे करने के लिए, बट तुमने उसमें से कोई भी काम नहीं दिया है. और जिन भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहे थे. With this now, hump, said the camel. Camel का वही जवाब, hump. I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता और तुम ये जवाब कम से कम मैं कभी नहीं देता तुम्हारी तरह. तो इसने ही सेड यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क. अब बहुत हो गया है, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम कुछ काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन, बट नो सूनर हैड ही
said it, then he saw his back that he was so proud of, puffing up into a great big hump. और जैसे ही उसने दोबारा से जिनको हम्प कह के रिप्लाई किया, तभी उसने ध्यान से देखा अपने आप को कि उसकी बैक बढ़ती चली जा रही है और एक बड़ा सा हम्प जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड कर रहा था अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी बैक के ऊपर, वहाँ बड़ा सा हम्प बन गया. Do you see that? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. Now you are going to work. उसने कहा देखो आज है थर्सडे और अब ये जो तुम बार बार हम बोलते थे, इसी ये तुम्हारे को भी ये तुम्हारा हम मिल गया है. मंडे से तुमने कोई वर्क नहीं किया है, अब तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, अब तुम काम कर सकते हो. हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक. तो कैमल ने कहा अरे मैं कैसे काम कर सकता हूँ, ये तो आपने मेरी कमर पे ये क्या इतना बड़ा हम्प दे दिया है, इसकी वजह से मैं क्या काम कर सकता हूँ. दैट हैज़ अ पर्पस सेड द जिन, ऑल बिकॉज यू मिस्ड those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. And don't you ever say I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. अब जिन ने उसको बोला कि ठीक है, ये मैंने तुम्हारे को ये हम इसलिए नहीं दिया है कि तुम अगली देखो मैं तुम ये नहीं मुझे कह सकते कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. अब तुम इस हम की वजह से बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक काम कर सकते हो और अब जाओ बाहर, डेजर्ट से बाहर निकलो और उन तीनों के साथ मिलकर काम करो. एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द 3 एंड फ्रॉम दैट डे to this, the camel always wears a hump. We call it hump now, not to hurt his feelings, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. कि वो अभी तक नहीं सीखा है कैसे behave करना है. So children, I hope you all must have understood the remaining part of this chapter also. Children, please take care of yourself and do your work on time. Thank you.